Anyhow, the first numerical that we have here, उसमें उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि जी करंट इज 1 मिली एम्पेयर एंड टाइम इज 10 सेकेंड्स. सो हमें क्या फाइंड करना है? चार्ज. सो Q इज इक्वल्स टू I into T. I is 10 into 10 to the power -3 and 10 into seconds. तो 2 zeros इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये 10 इंटू +2 बन जाएगा इंटू 10 to the power of -3. तो +2 - 3 जो है 10 - 1 की वैल्यू बन जाएगी. सो दिस वन. नेक्स्ट इज अ करंट इज पासिंग. तो passing through a conductor, how many electrons through it a cross sectional area in 1 second? टाइम दिया हुआ है. हमें करंट फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो I is equals to Q over T. Q is equals to NE over T. N हमें कैलकुलेट करना है. I into T over E equals to N हो जाएगा. I is given as, I की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1. एंड टाइम भी हमें 1 सेकेंड दिया हुआ है. डिवाइड बाई 1.6 इंटू -19 कूलम्स. तो ये ऊपर चला जाएगा तो 6.5 इंटू 28 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा हमारे पास. देन वी हैव, इफ द वोल्टेज applied on the bulb is doubled, then its power would be. So क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें? पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I. उसने क्या डबल किया? वोल्टेज को डबल किया. सो पावर इंटू 2 Yes. इंटू VI हो जाएगा. एंड इफ वोल्टेज फ्रॉम द बल्ब इज डबल एंड इट्स पावर बिकम डबल ही हो जाएगा हमारे पास. बल्कि 4 टाइम होगा बिकॉज वोल्टेज एंड करंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो जो न्यू पावर बनेगा उसमें वोल्टेज and current would go something like that. So new power would be 4 into VI. So this would be 4 times. Electron volt is not a unit of G. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो बनेगा वो, Potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नहीं बनेगा हमारे पास. बाकी सब तो एनर्जीज हैं तो उनके यूनिट्स वही होंगे. सो बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 volts cross a conductor current is 1.5 through how much energy in 2 minutes. So energy का फॉर्मूला क्या होता है? E is equals to VIT. So V is given as, V का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 10. करंट का दिया हुआ 1.5 एंड टाइम 2 minutes. तो 2 into 60 कर लेते हैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करके. तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 120. नो नो, द होल Oh, होल okay. थिंग. Okay, 1 second. आई गेस ये 20 इंटू वो 1200 बन जाएगा इंटू 15/10 हो जाएगा. 10 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 120 इंटू 15 क्या बन It's रहा? 1800. 1800 जॉल्स. तो उन्होंने किलो जॉल्स में यूनिट्स दिए हुए हैं तो ये 1.8 किलो जॉल्स बन जाएगा. वो ऑप्शन, ये ऑप्शन मुझे सिर्फ यही एक दिख रही है यहाँ पे, इसके अलावा मुझे नहीं दिख रहा था. देन हमारे पास है ओहम मीटर इज द यूनिट ऑफ. ओम मीटर किसका यूनिट बनेगा? V is equals to IR एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का बनेगा. cos R is equals to L over A होता है, ठीक है, इनटू रेजिस्टिविटी. A का यूनिट मीटर स्क्वायर इनटू मीटर टू मीटर, इससे कैंसिल आउट हो गया. इसका यूनिट ओहम्स. तो ओहम इनटू मीटर इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो कि मटेरियल डिपेंडेंट होती है उनमें. इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था. Okay.
Then we have 4 kilo ohms and 2 kilo ohm resistance parallel में connected है, equivalent resistance निकालनी है. So 1/4 plus 1/2, तो ये बन जाएगा 2 plus 1/4, 3/4 किलो ohms. किलो ohms से कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड ये बन जाएगा 4/3. एंड 4/3 का आंसर निकालने क्या बनता? 1.3. So 1.3 kilo ohms. If current through a fixed resistance is doubled, then energy dissipation is, so I is equals to P is, हमारे पास क्या फॉर्मूला था पावर का? I square RT. If resistance is constant, time is constant, इसको स्केयर करेंगे तो करंट को डबल किया तो क्या बन जाएगा? 4 टाइम बन जाएगा हमारे पास. P is equals to 2 का स्केयर 4 हो गया, बाकी I स्केयर इंटू आर टी साइड पे निकाल लिया तो 4 टाइम्स की वैल्यू बन जाएगा. नाउ आई कैन सी द हाइलाइटर. नाउ फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, किस में कनेक्ट किया जाता है? ऑलवेज The इन live wire. लाइव वायर. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ थर्मिस्टर रेजिस्टेंस उसकी क्या करती है? इट डिक्रीज. इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. देन हमारे पास आ जाता है, उसने पूछा हुआ है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं. कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कैन अ करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट डू यू थिंक? कैन इट फ्लो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस? No. And why is that? Because potential difference is basically the energy given to the charge. So without giving energy to the charge, potential difference is energy given to the charge. So without it, no current can flow through the circuit. So no work done per unit charge, no flow of current. If aluminum and copper wire of the same length have the same resistance, which have a larger diameter, and why? We know that copper versus aluminum, which one has a more resistance? Is a good conductor. Copper. ठीक है. सो कॉपर की रेजिस्टिविटी देखें क्या है टेबल के अंदर, कॉपर की रेजिस्टिविटी एंड उसकी एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी. Okay, 1 second. Where is the table? सेकेंड रेजिस्टेंस जहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, उसी के अंदर स्टार्ट स्टार्ट में रेजिस्टिविटी का टेबल दिया होगा, जहाँ पे R इज इक्वल टू L ओवर A की इक्वेशन है. Where is R is equal to L over A? There is no table. There might be the table in the other book. No, I just checked. From the other book. Because as per the formula, we have I found it.
Aluminum has greater resistance. Resistivity 2.65 into S पर -8 मुझे भी मिल गया ओहम मीटर एंड कॉपर की है 1.68 into 10 to the power of -8 ohm meter. So R is equals to resistivity L over A. अब उसने कहा है कि सेम लेंथ है सेम रेजिस्टेंस है which means resistivity will be equals to area into resistance over L. Resistance over L constant हो जाएंगे तो resistivity has a direct relationship with area. So अगर एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है इज हायर देन तो उसका एरिया भी क्या होगा ज्यादा होगा. Okay. तो यहाँ पे एल्युमिनियम आ जाएगा. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सॉरी व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच ऑफ अ सर्किट. ओपन स्विच में तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा. ओपन स्विच में हमारे पास इन्फिनिटी होगी एंड क्लोज स्विच में ऑलमोस्ट जीरो होगा. क्लोज स्विच is also known as short circuit. ओपन स्विच में तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा ना तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी. Will have infinite resistance. Do you get But it? why? Cause उसमें से करंट फ्लो No, ही I नहीं कर don't. रहा ना. करंट फ्लो ही नहीं कर रहा. As no current is flowing. When no current is flowing तो उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट कंसिडर की जाएगी. इफ करंट इज फ्लोइंग तो उसकी Okay. रेजिस्टेंस क्या होगी लेस कंसिडर की जाएगी ऑलमोस्ट जीरो कंसिडर की जाएगी कीपिंग दैट इनटू अकाउंट के वो वैल्यूज जो हैं वो सेम रहेंगी. Moving on to the next one. We have a bird is sitting on a high voltage transmission line, but it is not electrocuted. Why? When it tries to fly, it touches another bird that is sitting on second transmission line of the pole. Now it's heavily electrocuted. पहले वाले का तो ये आंसर होगा cause जो birds हैं they have insulations on their feet तो इस वजह से उन्हें नहीं फील होता इतना. ठीक है. Okay. ऑल्सो हम उसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि एज इट्स नॉट टचिंग द ग्राउंड तो एक फ्लो ऑफ करंट नहीं हो रहा सिंगल वायर पे वो बैठे हुए. बट इफ बर्ड इज सिटिंग ऑन अनदर व्हेन वो जो ट्राई करता है वो अनदर बर्ड को व्हेन इट टचेस तो सिटिंग ऑन द सेकंड ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द पोल देन इलेक्ट्रिसिटी गेट्स द पार्ट टू फ्लो थ्रू द बर्ड ना. फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास वी नीड अ क्लोज सर्किट टू electricity to pass we need a closed circuit. So when sitting alone, it's not touching the ground. But as soon as it touches the other bird, the path completes, so it gets heavily electrocuted. Next हमारे पास क्या है? Question number 5, and they have you are given five resistors of different magnitudes.
but you are asked to form a circuit whose resistance is smaller than. अच्छा ये तो बहुत easy है. Can you give the answer? You'll connect them in parallel. Yes. We will connect it in parallel, since in parallel resistance the total resistance is smaller than either of the resistance. Then we have question number 6. You are given n wires, each of resistance R. What is the ratio of the maximum to minimum resistance obtainable from these wires? सबकी resistance R है, तो मैक्सिमम तो हमारे पास सीरीज में आएगी, मिनिमम हमारे पास किस में आएगी, पैरेलल में आएगी. तो लेट्स फॉर्म द फॉर्मूला. Maximum would be in series. So R total is equals to R1 plus R2 plus so on. So R total would be N into R. And similarly, when it comes to minimum, so it would be in parallel. So 1 over RT is equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus so on. So it would be N over R. So RT would be R over N. रेशियो फाइंड करने को बोला हुआ है मैक्सिमम टू मिनिमम. तो R maximum over R minimum. R maximum is NR and R minimum is R over N. So it would be N square. R से cancel out हो जाएगा and it would be N square. Okay. Okay. So electric bulbs marked 100 volts, watts, 220 volts and 200 watts and 220 volts have the terminal bulb of the same length. पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो वैल्यूज बताइएगा, एक की क्या वैल्यू है? 100 वॉट एंड 220 वोल्टेज क्या है? volts. सेकंड की क्या है? 220. 200 वॉट्स एंड उसकी Yes. वोल्टेज भी सेम ही है. Yes. ओके. पावर इज इक्वल्स टू होता है v स्क्वायर ओवर r. r वुड बी इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर p हो जाएगा. तो लेट्स पुट दिस वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला. सो हमारे पास आ जाएगा 100 स्क्वायर, सॉरी 220 स्क्वायर, ready your calculator. 220 square over power is 100 and second one is 220 square over 200. देखिए किसकी रेजिस्टेंस क्या आ रही है. The 220 first square one डिवाइड is बाय. 484. ओके. And the second one is 242. So we have our answer. If both have the same length and made of the same material, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी थिकनेस क्या होगी? ज्यादा. Because we know that कि R is inversely proportional to area. So whose resistance is less, Okay. उसका area क्या होगा? कम. Let's say ये R2 है, ये R1 है. So R2 will be less than R1 because उसका area 2 would be greater than area 1 according to the relation.
Then we have, what is the next question? Why are we advised not to touch the electric switch when it's wet-handed? First, dry your hand. Because water is a conductor, our body is also a conductor. So whenever we touches the switch with the wet hand, there's a possibility that we can get electrocuted due to the wet hand. अच्छा आपको इतना तो आइडिया है ना प्योर वाटर इज नॉट अ कंडक्टर Yes. ठीक है इट्स द इम्प्योरिटीज इन द वाटर जो कि उसको कंडक्टिव बनाती है then we have why is it dangerous to touch a live wire while standing on earth barefooted because again वही same answer आएगा because our body is passage मिलेगा उसको हमारी body से to passage में Okay. sometimes if your one of the car's headlamp is burnt or not working but second lamp still gives light what do you conclude about the connection of the headlamps from this observation obvious है कि connected क्या होंगे they must be connected in Parallel. parallel because if one is not working the rest is working it means they are connected in parallel show that volt ampere is equals to what तो वो हमने कल भी किया था उसका power is equals to voltage into current volt इसका current unit volt आ गया current का unit ampere आ गया power is considered as watt to watt is equals to volt into ampere okay question number one the data that we have is it's we have a voltage of 12 volt we have uh, resistance of 6 kilo ohms we need to find the current passing through it and how much charge per cross-sectional area in 1 hour. So we have voltage as 12 volts, resistance as 6 kilo ohm, which would be 6 into 10 raised to power 3 ohms. And the time is 1 hour, which would be 3600 seconds, 16 to 60. I think so you know this already, but just for the safe side. First of all, we need to find the value of current, which would be I is equals to V over R. V is given as 12 and resistance is given as 6 kilo ohms. 6 2 is 12, so 2 into 10 is to power minus 3 amperes, which would be 2 milliampere. Check करेंगे ऐसे ही आ रहा है ना? Am I doing any mistake? 1 second, let me check. Cause 6 over 12 is 12 over 6 is 2 and 10 to the power of positive 3 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो वो एड अप हो नेगेटिव पावर हो जाएगी तो आई गेस यही बनेगा 2 मिली Yeah. एम्पियर ओके देन हमें चार्ज फाइंड आउट करना है चार्ज इज इक्वल्स टू Q is equals to I into T. I is 2 milliampere and T was 3600 second. तो 7200 बन जाएगा मिली कूलम्स बन जाएगा
In the answer sheet, it's 7.2 coulombs. हाँ, तो यूनिट्स कन्वर्ट कर लेंगे ना, अगर हम इसको 7.2 कर देते हैं Oh, तो okay. 10 to the power of +3 आ जाएगा, 10 to the power of -3 ऑलरेडी है, कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी विल हैव 7.2 कूलम. Then we have during lightning, uh, current is 15,000 ampere, and for question number 1, question number 2, 12 volt is applied on, sorry, current is 15,000 ampere, charge is 40 coulombs, uh, potential difference is 1000 volts, V is 1000 volt. What is the duration of lightning bolt? Find power. अच्छा जी, हमें दो चीजें करनी है. फर्स्ट इज हमें टाइम फाइंड आउट करना है, एंड सेकंड वी नीड टू फाइंड आउट पावर. ओके, इफ वी गो T is equals to I is equals to Q over T होता है. So T would be Q over I. Q is given as 40 and I is given as 15,000. चेक करें इसका क्या आंसर आ रहा है. 0.0026. 0026 or 026? 00. So it would be 2.6 into 10 raised to power -3 seconds, 2.6 milliseconds. Power calculate करनी है, power is equals to V into I होता है. V is given as 1000 and I is given as 15,000. So it would become 1 5 1 2 3 1 2 3. So 1 2 3 4 5 and 6. So it would become 15 into 10 to the power of 6 watts, or हम लिख देंगे इसको 15 megawatts. Do we have the same answer? Yes. Moving on to the next question, we have the diameter of a copper wire is 7.36, and okay, it's a diameter D. Resistance, find the length of 5 kilometer length. L is given as 5 kilometer and specific resistance is 1.72. So let's put the data. R is equals to rho L over A. Uh, Diameter is equals to 7.36 millimeter. So it would be 7.36 into 10 to the power of -3. Area is equals to pi d by 2 square. So area is equals to pi into d is 7.36 into 10 raised to power -3 divided by 2 whole square. पहले एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करें, क्या आ रही है. Okay. 7.36 divided by 2 का square. It's 1.4 multiplied by 10 to the power of -5.
1.4 into 10 raised to power minus 5 meter square. Is that it? Oh wait, I forgot the pi. And square लिया है ना 7.36 into 10 raised to power minus 3 divided by 2 का whole square. Yes. Okay, the answer is 4.25 into the power 10 to the power of minus 5. ऐसे? Yes. Okay. So we have resistivity as 1.72 into 10 raised to power minus 8. Length was 5 kilometers, so 5 into 10 raised to power 3 divided by 4.25 into 10 to the power of minus 5. Put it all into the calculator and see what's the answer come. The answer is 2.02. That matches with the answer given back as well. Yes. Uh, what is the answer again? 2.02. Ohms, right? Yes. Okay. वैसे ये पावर पावर आपस में कैंसिल भी हो रहे थे cause -8 and 3 जो है this would give you anyhow we don't need to get into detail of that when we can use the calculator to get the answer. अच्छा the next is two resistors 15 ohm and 75 ohms are connected in series if the voltage across 15 ohm is 6 volt. What is the amount of current passing through 75 वो? अच्छा जी 15 ohm, 75 ohm, and 60 volt. Okay. So R1 is, hold on, 60 and 75 ohm. R1 is 60 ohm, and R2 is 75 ohms, whereas voltage across 60 is, कितना था value? 60 volt था. Yes. Was it 60 and 60? 15 ohms, sorry. वही तो मैं कह रहा हूँ एक वैल्यू 60 थी but not the both values. 60. R1 is 15 ohms and R2 is low, whereas 15 ohms के across जो voltage होता है तो 60 volt. अच्छा जी, since we know that series के अंदर हमारे पास current क्या रहता है same, तो if पहले तो हम series की total resistance निकाल लेंगे, total resistance क्या आ जाएगा 15 plus 75. Okay, so Okay. that would be 90. बल्कि नहीं, हमें टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकालना, हमें करंट ही निकालना है सिंपली बिकॉज वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करती है, उससे हमें टोटल वोल्टेज नहीं दी हुई. सो आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर and V is 60 volt and resistance across it is 15 ohms. So 15 4 से 60 होता है I guess. Yes. Okay, good.
एंड हमें क्या करना था, करंट अक्रॉस वो निकालना था, सिंस इन सीरीज करंट रिमेन सेम, सो I2 भी किसके इक्वल होगा, 4 एम्पेयर। Okay, moving on to the next one, we have two resistors 20 ohms and 40 ohms are connected in series with a 50 volt battery. अब देखो यहाँ पे उसने टोटल वोल्टेज हमें दी हुई है, वहां पे उसने सिर्फ, नहीं नहीं, आई गेस आई एम स्किपिंग अ क्वेश्चन। ओके, Yeah. you give in three resistance 5 kilo ohms, R1 is 5 kilo ohms, R2 is 10 kilo ohms, R3 is 15 kilo ohms. You are asked to connect them in different possible combination. Find the greatest and smallest resistance you can obtain by, simple answer है इसका, greatest कब आएगा, जब हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और स्मॉलेस्ट कब आएगा। In parallel. सो ये तो यहीं पे सीरीज वाला तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। सीरीज का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5 + 10 + 15 30 किलो ओम्स हमारे पास सीरीज में बन गया। पैरेलल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 1/5 + 1/10 + 1/15। फाइंड द आंसर टू दिस वन। ये आर मैक्सिमम हो गया हमारे, दिस वुड बी आर मिनिमम। 1/5 + 1/10 + 1/15। It's 0.36. हमें रेसिप्रोकल लेना है, सबसे पहले मुझे इसका बताओ, Uh, 1/5 + 1/10 + 1/15 का क्या आंसर आ रहा है। 11/30. 11/30 किलो ओम्स है, डू नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है, बिकॉज ये सारी वैल्यूज किलो ओम्स के अंदर है। Okay. तो व्हेन विल डू इट, 30 किलो ओम्स डिवाइडेड बाय 11, दिस वुड बी आर मिनिमम। 30 डिवाइड बाय 30 किलो ओम्स इंटू 11 क्या आंसर आ, डिवाइड बाय 11 क्या आंसर आ रहा है, 2.7 kilo ohms. 2.7 किलो ओम। सो ये हमारे पास मिनिमम हो गई फॉर क्वेश्चन नंबर 5। Question number 6. Two resistors of 20 ohms and 6 है ना, 6 करना है ना हमें, और 7। 6. 20 ohms is R1, R2 and in series with a 50 volt battery, यानी EMF हमारे पास जो है वो 50 volt है। Find the current and power for each resistor. Find the current and power for each resistor if they're connected in parallel. Okay, long question. रेजिस्टेंस बताइएगा मुझे दोबारा से। 20 and 40 ohms. Resume. Question के अंदर, sorry, give me the resistances again. What were the resistances? 20 and 40. Okay, क्विक सा क्वेश्चन है, उन्होंने आपको और क्या डाटा दिया हुआ है। The voltage is 50 and that ओम्स है they're किलो connected ओम्स in है, series.
ohms. And voltage is 50 volts, right? Yes. पहले हम लोगों को टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है टू फाइंड आउट टोटल करंट सो RT would be equals to 20 plus 40 equals to 60 so I would be is equals to V over R. V is 50, R is 60 so 5 over 6 जो है 0 point something का आंसर आ जाएगा 0.83. 0.383 एम्पेयर. सेकेंड पार्ट में उसने हमें क्या बोला हुआ है फाइंड द करंट एंड पावर ऑफ ईच रेजिस्टर. So since we have the total voltage, so V1 is equals to IR1 and V2 is equals to IR2. Uh, I is 0.83 and R1 is 20. I is same 0.83 and R2 is 40. So क्या आ जाएगा आंसर? 16.6 for the first one. And 33.2 for the second one. 13. 33.2. 33.2. When they add up together 50 दे रहे हैं ना दोबारा से? Yes. कल इनका सम 50 की इक्वल होना चाहिए. ओके. अच्छा जी, अब हमें क्या कैलकुलेट करना था? पावर इक्वल्स टू वी आई होता है एंड पावर का फॉर्मूला वी आई कर लेते हैं या आई स्क्वायर आर कर लेते हैं. P1 is equals to I square R1 and P2 is equals to I square R2. So I square is 0.83 square times 20 and 0.83 square times 40. बेसिकली जो V का आंसर निकला है 16.6 इसको 0.83 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो एंड 33.2 को अगेन मल्टीप्लाई कर दो. It's coming out to be 13.8 watts and this is coming out to be 27.6 volts. Section 1 completed. Moving on to section 2. Question number 6. Section 2 is parallel. 1 over R1 plus 1 over R2 gives 1 over 20 plus 1 over 40. This would be 2 plus 1 over 40, 3 over 40, 40 over 3 equals to R total. And 1 point something आ जाएगा आंसर हमारे पास 1.9 और समथिंग. उन्होंने रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करने को बोली है ना कि नहीं? No, they just asked for the current and power. चलो मैंने कर दिया इसको कर दो इसको क्या आंसर आ रहा है? 40 divided by 3. It's 13.3. देखो रेजिस्टेंस कम हुई तो करंट की वैल्यू कितना इंक्रीज हो गया. सीरीज में जस्ट 0.83 था एंड पैरेलल में कितना हो गया? इट्स आई गेस मच मोर देन वो हम डबल ट्रिपल की बात कर भी नहीं सकते. अच्छा जी, आर की वैल्यू आ गया ये. सो हमें क्या निकालना था? करंट. बिकॉज पैरेलल में करंट वेरी करता है तो V over R1, V is 50 and R1 is 20 and I2 is V over R2 which is 50 over 40. Go for the answers.
The first one is 2.5 and the second one is डबल ही होगा उससे, cause वो 50 और 40 है तो डबल ही होगा उसके। हाफ, सॉरी, 1.25. हाफ हाफ 1.25। अच्छा जी, करंट्स आ गया, पावर कैलकुलेट करना था V1 into I1 and P2 is equals to VI2 because voltage is same, so 50 into I1 2.5 था and 50 into 1.25, so I guess ये 125 वॉट्स बन जाएगा और ये उसका हाफ हो जाएगा 62.5 वॉट्स, ऐसे ही है। yes. Next, question number 7, we have two resistors of 4 kilo ohms and R1 is 4 kilo ohms and R2 is 6 kilo ohms are in parallel. A 12-volt battery is connected across its end. Find the value of the equivalent resistance, current passing through each resistor, potential difference, and repeat the question. Oh, if they are in series, यार पैरेलल कर लेते हैं, फिर सीरीज आप खुद ही कर लेना, ठीक है, Okay. बिकॉज वो बहुत लेंथी बन जाएगा। गिव मी द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस अगेन। 4 kilo ohms and 6 kilo ohms. एंड व्हाट इज द वोल्टेज? 10 12. वोल्ट्स? 10 नहीं था, 10 वोल्ट्स Oh यार। yes, it's 10. Sorry. अच्छा जी, पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर है तो सबसे पहले हम लोगों ने उनको कर लेना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/4 प्लस 1/6 इज 6 plus 4/24, 10/24, 24/10, and this would be 2.4 kilo ohms. यही आ रहा आंसर। Yes. देन हमारे पास सेकंड क्या था, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। करंट I is equals to V/R1, I is equals to V/R2. So V is 10/4 and 10/6, तो 10/4 and 10/6 का आंसर क्या आएगा? किलो ओम्स, डू नॉट फॉरगेट इट्स किलो ओम्स। It's Okay, the coming first out to one be will be 2.5. 2.5 and it's coming out to be uh 1.67 into 10 raised to power -3, so मिली एम्पेयर्स बन जाएगा। ओके, करंट्स हो गया हमारे पास, अब हमने क्या करना है, और कुछ था? And the potential difference. पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही रहता है ना, सो V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट्स। सीरीज भी ऐसे जल्दी से हो ही जाएगा। 4 + 6 is 10 किलो ओम्स, उसमें करंट सेम रहता है तो हमें I इज इक्वल्स टू V/R टोटल कर लेना है, टोटल करंट पहले निकालना है। टोटल वोल्टेज इज 10 वोल्ट एंड टोटल रेजिस्टेंस इज 10 किलो ओम्स, सो आई गेस 1 मिली एम्पेयर करंट बन जाएगा। ये करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। एंड फिर करंट चूंकि सेम होता है, सो I1 इज इक्वल्स टू I2 वुड बी 1 मिली एम्पेयर, whereas voltages वेरी करती हैं, so V1 is equals to IR1 and I is 1 milliampere into 4 किलो ohms, तो ये 4 बन जाएगा, 4 volts, and V2 would be I is 1 into 10 raised to power -3 milliampere and R2 is 6 into 10 raised to power 3 kilo ohms, cancel out तो 6 volt when added together तो voltage again हमारे पास वो हो गई। So we are done with this question. Strangely थोड़ा जल्दी हो गया।
देन उन्होंने हमें बोला है हाउस इज इंस्टॉल्ड विद 30 एलईडी बल्ब्स ईच ऑफ 12 volts which are used 10 hours daily, 5 fans of 5 volt which runs 18 hours daily. Find the number of electrical units used for a month for these, whereas one unit value is 15 and 1 month is equals to 30 days. Okay. Give me the values that is given. For part A, it's 30 LED bulbs of 12 watts, which are used for 10 hours. Voltage is, power is 12 volt for first one. Yes, Power one is 12 volts and voltage कितना है उसका? नंबर उसके कितने हैं? 30 बल्ब्स 30, हैं and runs for time कितना है? 10, 10 hours. 10 hours, so 10 into 60 into 60 कर लेंगे. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था पहले एनर्जी कैलकुलेट करने का? एनर्जी का फॉर्मूला था आई गेस वॉट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेज. वॉट्स कितने हैं? 12. नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? 30. टाइम्स इन आवर कितना है? 10. कॉस टाइम इन आवर्स ही ले लेते हैं हम लोग, किलो वॉट आवर्स में आंसर निकाल लेते हैं ना, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 1000 इंटू नंबर ऑफ डेज कितने थे? 30. डेज कांस्टेंट है, इंटू 30. देखें क्या आंसर आ रहा है इसका. 108. किलो वॉट. किलो वॉट आवर्स में आ रहा है या जस्ट आवर्स में आ रहा है? I don't know. यू आर गेटिंग जस्ट 108 ना. Yes, हाँ, तो वो के लिए किलो वॉट्स के लिए होता है फॉर्मूला. सो E1 came out to be 108 kilowatts. E2 को भी एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यूज करेंगे. नाउ नंबर ऑफ वॉट्स कितने थे हमारे पास? व्हाट इज द नेक्स्ट पावर? 50. और नंबर कितने हैं उसके? 5. 5. और टाइम कितना था? 18 आई गेस है ना. Yes, डिवाइडेड बाय 1000 एंड इट्स ऑल्सो रन फॉर 30 days. देखें क्या आंसर आ रहा है. it's 13.5. 13.5 or 135 because I'm getting 135. 50 into 5 into 18 into 30 divided by 1000. 135 आ रहा है. सो टोटल पावर कितना हो गया? E1 plus E2. It's 108 plus 135. So they will add up to 234 kilowatt hour. And एक यूनिट का कितना वैल्यू था? 15. सो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा? 234 into 15. क्या आंसर आ रहा है? 3,645. 365 4554. 45. This is the cost in rupees. आप ये रीचेक